ईशा वास्योपनिषद श्लोक 5। तदेजति तन्ने जति तद दूरे त्वदन्तिके तद अंतरश्च सर्वस्य तदु सर्वास्य अस्य वाहर्त। ये जो श्लोक है, जो मंत्र है, इसमें प्रभु की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। और अगर आप देखें तो एक मजेदार विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास इसलिए कि इसमें दो चीजें हैं। जैसे शुरू में बोल रहा है तत जेति, तत मतलब वह प्रभु एजति गति करता है, और तत न एजति, वे प्रभु गति नहीं कर रहे हैं। ये दोनों वाक्य परस्पर विरोधी वाक्य हैं, ऐसा लगता है। पर ये जो विरोध का आभास है, ये नष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि प्रथम वाक्य की धातु मान के अगर हम चलते हैं कि प्रभु सारे ब्रह्मांड को गति दे रहे हैं, एजति एजयति, शरीर चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु ये सब गति आत्म तत्व के कारण है। अतः आत्मा ही गति दे रही है। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? वो पिता परमेश्वर हैं, प्रभु हैं। उन्हीं के कारण से तो सारी गति दी जा रही है, परंतु क्योंकि वो हर जगह मौजूद हैं, सर्वव्यापक हैं, इसलिए वे गति शून्य हैं। उनकी तो गति है ही नहीं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं वो गतिमान भी हैं। तो वो कहाँ जाएं, कहाँ आएं, तो पहले से ही हर जगह विद्यमान है। तो जब हम ये कह रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं तद दूरे, वे प्रभु दूर से भी दूर हैं, और तथा अंतिके, और वे समीप से भी समीप हैं, यानी कि दूर भी हैं और समीप भी हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे विरोधाभास हो, परंतु अगर देखें तो अभिप्राय कुल मिलाकर इतना है कि प्रभु सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब जगह हैं, और हम अपनी कल्पना में जितनी दूर पहुंच सकते हैं उतनी दूर, दूर से दूर भी प्रभु हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी अगर अगली पंक्ति देखें, ततः अस्य सर्वस्य, वे प्रभु सब जगह हैं, सब जगह अंत है, अंदर हैं, यानी कि सब ब्रह्मांड के अंदर हैं। और तऊ अस्य सर्वस्य, वे प्रभु इस जगत के बाह्य भी हैं, बाहर भी हैं। तो अंदर होते भी प्रभु अंतर्यामी हैं, बाहर होने से भी वो सबको सुरक्षित कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रभु के बारे में जो भी इसमें विचार दिए हैं वो विरोधाभास होते हुए भी विरोधी नहीं है। और इसका जो अगर हम भावार्थ देखें तो भावार्थ यही है कि प्रभु दूर से दूर और समीप से समीप है, और अंदर बाहर सब तरफ प्रभु ही व्याप्त हैं। यानी कि अर्थात कि सर्वव्याप्ति की भावना वस निवासी धातु द्वारा ईशावास्यम शब्दों में व्याप्त हुई है। यानी कि प्रभु दूर से दूर हैं और समीप से समीप हैं, अंदर से बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। तो इस का अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो हमारे पास तीन इंटरप्रिटेशन हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, श्री अरविंदो और गीता प्रेस। तो first we'll decide what is there in the Shlok 5. So in the Shlok 5, if you see the Shlok 5 just now we have discussed, it gives us
the philosophical themes, particularly the nature of the self and where it is present, a relation with the cosmos, that is the Prabhu is present everywhere. So let us see what the Adi Shankaracharya says. Adi Shankaracharya is focus is on the transcendence of the self and the Maya. Maya means illusion. Maya of the material world. And he advocate for the realization of unity of Atma and Brahma to escape the cycle of the birth and death. And he emphasized the non-dual reality, Advait, where we say that Atma is identical to the Brahma. Ultimate reality is Brahma. So Atma is identical to the Brahma, and this sloka suggests that also the self is omnipresent. It remains untouched by the imperfections of the material world. So we can see Atma everywhere, and Atma is different from the Brahma. So this Adi Shankaracharya said. Whereas if you see the Maharshi Aurobindo, he encouraged an active participation in the divine manifestation and suggest the understanding of the self lead to the transformation of a life on the earth. That is a spiritual evolution rather than merely withdrawn from the world. So Sri Aurobindo, I'm revising it again, he encouraged an active participation in the divine manifestation. And he says that understanding the self is very, very important because it leads to the transformation of life on the earth. That is a spiritual revolution rather than mere withdrawal from the world. So if you see further, Maharshi Aurobindo presents a more integrative approach, emphasizing not just transcendence, but also the evolution of consciousness. He views the shloka as a call for realizing the divine presence in all human beings, everywhere, and interconnectedness of all the existence. So this is what the Maharshi Aurobindo says. Whereas if you see the Gita Press emphasize living a life of integrity and spiritual dedication, combining the philosophy of practical application. It suggests that devotion and action, by the great devotion and by the right action, one can attain the higher realization which is said in this Upanishad. And he says that practical spirituality and the application of the shloka's teaching in daily life is very important. He says, Gita Press says, the importance of devotion, rituals, and adherence to dharma as a means to realize the ultimate truth. If you see the comparison of all the three, then philosophical, the Gita Press says about devotional and practical approach. Maharshi Aurobindo integrate
evolution and transformation into his interpretation. And Adi Shankaracharya leans heavily on non-dualism, Advait, and the illusion of the material world. While the goal of the spiritual practice for Shankaracharya, it is the realization of self-identity with the Brahma. For Aurobindo, it is the evolution of consciousness and active realization in the world. And for Gita Press, it is achieving spiritual growth through devotion and righteous living. So, friends, if you see this shlok or this mantra, these different perspectives we have discussed of Adi Shankaracharya, Maharishi Aurobindo, and Gita Press, they offer a rich tapestry of understanding that allow all of us for a comprehensive approach to the teaching of the Isha and its relevance to the spiritual practice today. So we are actually taking one mantra at one time and interpreting it. And if you see all mantras, they are joined together like a pulse in the string. So thank you very much. Stay with us for the next mantra 6. Yastu sarvani bhutanya atmanavanu pashyati sarvabhuteshu chatmanam tato navichikatsiti. So that is a very interesting mantra that we will discuss later on. Till then, thank you and namaste. God bless you all.